So in the first lecture, we talked about introduction to media discourse. What is media discourse? We talk about analysis. What is analysis? You can see over here. I gave you some examples, like the example which you can see over here. Can I help you? No, you can't. Can anyone remind me what example, how I gave this example? तो इसको दोहरा सकते हैं क्या दूसरा से मैंने इसकी एग्जांपल दी थी? Yes, sir. Just kindly remind this one. क्या मैंने इसके बारे में कहा था? Sir, the question was, can I help you? Someone asking for someone help, and no, you can't. It's mean, yeah, it's a negative way is response to the question. We analyze the question. Yeah. Can I help you? It is a discourse. And the answers, no, you can't, is negative, and yes, you can, positive. But these are rude answers. These answers are showing rude because no one is, that person is not asking the question from you. He or she is giving offer to you. So the reply should be very simple. No, thanks. Thanks a lot. Or yes, please. So this is how we analyze. So this is called analysis of discourse. So here we will discuss media discourse analysis. Means we will discuss the discourses of media. And if you remember, I also told you about discourse, and today, inshallah, we will discuss this in detail further. Why? Because we not only have to study media discourse and media discourse, but we have to also study literary discourse. Then we talk about some more examples. Then I talk about media. What is media? So we discuss here that the word media comes from the Latin plural of medium. The singular of this one is medium. In modern English, this word can be treated as either a singular or plural, both. So if you use is with media, it is also acceptable. Or if you use are with media, it is also acceptable. So basically, media is taken from medium. और बाज़ जगहों पे मीडियाज भी कहा जाता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है. We further talk about media. Media are the sources of communication, and they are tools used to store and deliver information and data. When we talk about two types of media, electronic media and print media, am I right? Then we talk about two types of media. Yes, sir. Electronic and print media. अब होता ये कि when we talk about the discourse of media discourse, so remember it is different from usual discourse. जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो discourse इस्तेमाल करते हैं, जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, so media discourse is different from that one. जिसमें मुख्तसर रखा जाता है चीजों को. तो ये हमारे पास था first class में. Then the second one. Then we have the second one. Here we talk about forms of media. In forms of media, we discuss print media, electronic media. Print media means anything that is in print form, such as newspapers, books, pamphlets, leaflets, booklets, wall chalking, and many others. And I also told you about the scope of print media. So scope क्या है उसके बारे में भी हमने discuss किया था. And we also discussed that print media is comparatively cheaper than electronic media, or less expensive than electronic media. Why? Because print media is something that is everywhere. Whatever you buy, you must see something written on that particular product. So that comes in print media.
Even if you buy clothes, shirts, pants, you will find something written on that pant. Even the name of the company is printed over there. So this is also the example of print media. So it is everywhere. So how to write such discourse, this is something very important. We'll discuss inshallah later on. Then we talk about electronic media. We also discuss about print media, that it is the oldest form of media. मीडिया की जो सबसे oldest form है वो print media ही है, जबकि electronic media तो बाद में आया. Then we talk about electronic media, and electronic media means which comes on a screen. So electronic media comes in the form of computer, and then you'll find MP3 players, video games, television, radio, television, and internet. These are the best sources of electronic media. We also discussed this thing that we also discussed that the spike in electronic media really started to grow in 2007. 2007 से उसका एक बहुत जबरदस्त किस्म की प्रोग्रेस में आई when the release of the first iPhone came out. अगर आपको याद हो, आज से 8-9 साल पहले very few of us had Android phone. We used to have simple phone, but after I think 2010 or 2012 in Pakistan, you will see that people started buying Android phones, and with the help of Android phones, what happened that we now watch television, we listen to music, videos, we watch videos and all such things on phone. Now TV, the use of TV has become very reduced, and people use mobile phone for this purpose. So this is the use of electronic media. Then media in modern term. What is social media? We also discussed this thing. Growth of internet. What is internet and how did it grow and how is it growing in modern world? We discussed this thing. So this is how we did our two. I did 2 lectures. I delivered 2 lectures, and today will be the 3rd lecture. And in this lecture, we will discuss discourse. What is discourse? And then there will be other 2 classes in which we will discourse from literature point of view. Any question regarding this? These videos will be uploaded inshallah tonight. अगर किसी को इस हवाले से कुछ पूछे तो मुझसे भी पूछ सकते हैं. Now we'll talk about discourse. I'm giving you 1 minute. If you have any question, you can ask me. It's a very interesting subject. Sir? Hello, Yes, sir? yes. Sir, I'm confused that media is a very different field and discourse is something that is related to linguistics. So how they are both connected and become a thing which is now we are learning in literature? Very What good. we have to do? Your question is very good and very interesting. Remember, discourse is related to every field. Every field. You know, in political field, we have discourse, political discourse, religious discourse, social discourse, and argumentative discourse, poetic discourse. Discourse का मतलब क्या है? How do you communicate things? So this is what is, whether in written or spoken, the way we communicate, this is called discourse. So of course, when you talk about media, so media has its own discourse. Media का अपना एक discourse होता है, in which they take special care of words, they reduce words. For example, आपने इश्तिहारात को देखा होगा, print media, अखबार कौन कौन पढ़ता है? Who reads newspaper? पढ़ते ना? So we ये need सब पढ़ते some हैं. time. अब आप थोड़ा अखबार में गौर कीजिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात बता रहा हूँ. You must see over there उनका जो डिस्कोर्स है. फॉर एग्जाम्पल वो ये लिखेंगे, 2 men dies in an accident. Pakistan win the match. Right? Means instead of using past simple, they will use present simple. If instead of using present perfect, they will use present simple.
in many cases you'll find that they don't use articles, they don't use they also skip some other words. Means जिससे message convey हो रहा होगा वो इस्तेमाल करेंगे. Why? Because they have to save space. It is difficult, it is very expensive to get to pay for words. So what happens that they try to reduce words. तो ये उनका discourse है, उनका अंदाज है, हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करने का. All these things communicate. कल मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि whatever we wear, whatever we can take or whatever we buy, all these things communicate something to us. आप एक मिसाल के तौर पर दुकान से नोटबुक लेते हैं, उस नोटबुक के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, तहरीर होगा जो कम्युनिकेट कर रहा है हमसे, कुछ हमें कुछ ना कुछ बता रहा है. If you buy for example एक बर्तन खरीद लें, वो भी आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा होगा. So all these communicate something to us. हमारे ड्रेसेस, हमारा जो है चलना फिरना, all these things have certain elements of communication. So newspaper have different discourses, novels have different discourses. When we see articles have different forms or style of discourse. Similarly, you will find many other types of writing, so they have their own discourse. So remember, discourse is something that is related to all these fields, because discourse means what? ये देखिए इसकी definition मैं आपको बता रहा हूँ. What is discourse? It is a long and serious treatment or discussion of a subject in speech or writing. It is the use of language in speech and writing in order to produce meaning. Discourse is the language that is studied usually in order to see how the different parts of a text are connected, such as spoken or written. तो हर फील्ड में हमारे पास seriousness होती है. Whether we talk about politics, we talk about, of course, social life or religion, even in media. So that's why we have media discourse, we have political discourse, we have social discourse, we have poetic discourse. Is that clear? आप MA English करने के बाद ये मत सोचिएगा कि you will, after doing MA English, you will only be able to teach English. You can also join media, because it also plays a very important role in media. Of course, we don't study many subjects of media. There are many other subjects which we need to study. When those things we can do in mass communication. Mass communication एक department है जिसमें आपको इससे relevant subjects मिलेंगे. यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है, media discourse analysis और journalistic writing का एक है literary discourse. तो उसमें हमें सिर्फ राइटिंग के हवाले से बताया जाता है कि किस तरह से हमने अगर एक आर्टिकल लिखना है तो उसको हमने कैसे लिखना है. हमने अगर किसी मिसाल लेटर लिखना है, हमने ठीक है, हमने लेटर लिखना है, वी हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर. मिसाल प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में या किसी जगह आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, तो हाउ टू राइट दैट लेटर. आपने कोई बिजनेस कारोबार के हवाले से कुछ लिखना है, तो हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर मिनट्स आपने कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर लेटर. This is how you will have to. These all are called discourse. These all are serious writings which you have to do. और जो हमारे पास इसमें आते हैं, मीडिया की जो चीज़ें मीडिया से रिलेटेड हो मीडिया में आ जाएंगे, जो चीज़ लिटरेचर से रिलेटेड हो लिटरेचर में आ जाएगा. तो इसके बाद जो आपके पास क्लास होगी सेकंड सब्जेक्ट की, दैट इज लिटरेरी डिस्कोर्स. तो उसमें भी हम डिस्कोर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली. इज इट क्लियर व्हाट इज डिस्कोर्स? So discourse is a long and serious treatment or discussion of a subject in a speech or writing. How speech में हो या writing में हो. It is the use of language in a speech and writing in order to produce meaning. Meaning produce करनी है, how speech में हो या writing में हो. Discourse is the language that is studied usually in order to see how the different parts of a text are connected, such as spoken, written discourse. Then further, discourse is a generalization of the notion of a conversation to any form of communication. Generalization of the notion of a conversation to any form of communication. किसी भी form of communication में आपने जो conversation करनी है उसको generalize कैसे किया जाता है वो आपके पास discourse में चलेगा. Discourse is a major topic in social theory with work spanning fields such as sociology, anthropology, continental philosophy and discourse analysis. ये सब इसमें आ जाएंगे. डिस्कोर्स एनालिसिस आपने आपके पास है, मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस है. इसके अलावा सिंपल एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्कोर्स
एनालिसिस, जिससे हर किस्म के डिस्कोर्स को एनालाइज किया जाता है। मीडिया डिस्कोर्स एनालिसिस में तो सिर्फ मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और उसके बारे में देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू विल फाइंड मेनी थिंग रिलेटेड टू ग्रामर एज वेल। व्हेन वी राइट एड्स, जब हम किसी भी इश्तिहार को लिखते हैं या मीडिया की किसी भी तहरीर को पर काम करते हैं, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट the parts of grammar as well, grammar and how to write। स्पेशली आपको इसमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल हो गया, नरेशन का इस्तेमाल हो गया, उसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हो गया। देयर आर सम you will find poetic devices, figure of speech, which we have to use in such kind of writing. Now, discourse in linguistics, जो मैंने आप लोगों को लिस्ट भेजी है, have you gone through the list? I have given you the syllabus. Have you gone through the syllabus of media discourse analysis? Yes, sir. अच्छा, इसमें याद रखिएगा, normally we do not give syllabus to students because some students create problem. कुछ स्टूडेंट जो है ना वो बेस करते हैं, तो आपने ये नहीं पढ़ाया तो ये पढ़ा दिया। ये सिर्फ एक फॉर्मल सी एक लिस्ट है, सिलेबस है। We can make changes according to the situation, according to the class in this syllabus. Is that clear? Yes, sir. तो इसमें जो कुछ चेंजेस हम क्लास को देखकर, स्टूडेंट्स को देखकर और सिचुएशन को देखकर we can make certain changes. For example, अगर मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ाना आप लोगों को ना, तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत सी चीजें और पढ़ानी पड़ेंगी। Then you will be able to understand that particular thing. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उस चीज को स्किप करके वो चीज पढ़ाऊँ जिससे आपको फायदा हो, प्रैक्टिकली आपको फायदा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर नरेशन जो है वो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, और जब मैंने स्टूडेंट से पूछा तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आई हैव सीन दैट 90% स्टूडेंट और 80% स्टूडेंट्स और समटाइम 85% स्टूडेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड और दे कुड नॉट सॉल्व द थिंग व्हिच आई गेव देम अबाउट नरेशन। नरेशन में बेचारे फंस गए। अब एक बंदा नरेशन में ही फंस रहा तो आप कैसे किसी को नरेटिव चीज़ें बताएंगे या उस स्टोरी के हवाले से बताएंगे? फिर डायलॉग्स के हवाले से चीज़ें होती हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है कि पहले स्टूडेंट्स को वो बताना पड़ता है, उन चीज़ों का बताना पड़ता है, देन वी कम टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर? वो चीज़ें रिलेटेड है ग्रामर से और इन दोस थिंग्स आर रिलेटेड टू ऑफ कोर्स सिंटैक्स। तो वो चीज़ें इसमें नहीं, यहाँ पर सिर्फ मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं, लेकिन उनको लीड कैसे करेंगे, उन तक पहुँचेंगे कैसे, वो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है। वो हमें फिर according to the situation and according to the strength, the position of the class, we have to teach. कहीं उन चीज़ों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती और कहीं में बहुत डीपली जरूरत पड़ती है। Is it clear? तो ये दोनों ही सिलेबस के हवाले से बातें हैं। तो इस पर कोई ये ना कहे सर इसमें तो ये लिखा हुआ आपने ये नहीं पढ़ाया, तो इसमें ये लिखा हुआ नहीं पढ़ाया, तो वो हम उसको जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इम्तिहान आपका उसी में से होगा। और आपको मैंने जो सिलेबस भेजा है उसके नीचे बुक्स की लिस्ट है, इनमें से काफ़ी किताबें जो है वो आपको मिल जाएंगी। यू कैन फाइंड दोज थिंग्स फ्रॉम इंटरनेट। तो इसके अलावा मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक रीडिंग पैक बना के दे दूं, ठीक है? लेकिन आप अगर चाहें मैक्सिमम और मटेरियल हासिल करना चाहें सो यू कैन इजीली गेट देम फ्रॉम इंटरनेट एज वेल। इनकी PDF फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो सर्च करना जानता है अच्छा, तो दैट पर्सन कैन इजीली डू इट, और वो करने के बाद शेयर भी कर सकता है ग्रुप में और भेज भी सकता है कि आप में से कोई ना कोई तो सर्चिंग अच्छी जानता होगा ना। Yes, sir. वो सर्च करके आप उसको PDF से डाउनलोड करके भी जो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। एंड आई विल आल्सो प्रिपेयर वन रीडिंग पैक जो आपको मैं सेंड आप वहाँ पे रखवा दूंगा डिपार्टमेंट में। आई आल्सो टॉक टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर साकिब अबाउट फिजिकल क्लासेस, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आफ्टर अ वीक विल टेल यू अबाउट इट। तो कोशिश यही होगी कि कम से कम एक क्लास फिजिकल हो जाए, ताकि फिजिकल का जो डेफिनेटली है वो हमें फ़ायदा हासिल हो। Okay, in linguistics, discourse refers to a unit of language longer than a single sentence. तो linguistics में क्या है? What is linguistics by the way? मैं आप लोगों को linguistics का बता रहा हूँ, पता चले आपको linguistics का concept clear now. What is linguistics? Hurry up. Very simple. Study of language. Scientific study of language. In a systematic way. Study of language. Only study of language, not any other In a thing. systematic way. Scientific study of language. Okay, in a systematic way.
Scientific study. Yes, very good. So scientific study of a language. Scientific study of any language is called linguistics. Remember, linguistics is not only related to English. It is related to any study that is done in a scientific way. Means in linguistics, you can prove things. The way scientists prove things in a lab, so you can prove things in this way, and this is what we call linguistics. So in linguistics, जब हम linguistics की बात करते हैं, तो उसकी बहुत सारे branches हैं. There are many courses which we have in linguistics. उनमें आपने चंद के बारे में सुना होगा, psycholinguistics, sociolinguistics. So these are very famous. So in linguistics, discourse refers to a unit of language longer than a single sentence. So discourse से मुराद क्या है कि a unit of language that is longer than a single sentence, जो कि एक single sentence से लंबा होता है. Then there is another. The word discourse is derived from the Latin prefix dis, meaning away, and the root word corre, mean to run. तो क्या कह रहे हैं? Here it is being said that discourse translates to run away. Means it refers to the way that conversation flows. यानी किस तरह से conversation flow करता है. रुकना नहीं है, बस ठहरना नहीं, चलते रहना. This is what discourse is. To study discourse is to analyze the use of spoken or written language in a social context. अगर कोई discourse को study करना चाह रहा है तो वो analyze करता है the use of spoken or written language in a social context, किसी भी social context में. Further, discourse studies look at the form and function of language. लैंग्वेज का फॉर्म यानी स्टाइल क्या है और उसका फंक्शन क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको मिसाल दी थी ऑफर वाली. क्या मिसाल थी वो? कैन आई हेल्प यू. नाउ इसकी फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? Requesting? Interrogative. Yeah, interrogative is the form. And function? To help. Yeah, Request. form is interrogative and function is offer. Function is offer. It means it is functioning as a you can say sentence which is showing offer, and its form is interrogative. Now it doesn't mean that since it is its form is interrogative, it means it will be a question. कि ये चूंकि इसका फॉर्म जब इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है. फॉर्म इसकी इंट्रोगेटिव है, बट इट इज फंक्शनिंग एज अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर ऑफर. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी. फॉर एग्जांपल दिस वन, स्टॉप. अब ये स्टॉप को टेक्निकली आप क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वर्ड? Command. Order. Order. This is order. What is this sentence? So it's also an order. अब ये जो आपके पास स्टॉप, ये ऑर्डर भी हो सकता है. जब तक हमें सब्जेक्ट का जब तक हमें पता नहीं चलेगा, कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं चलेगा, हम थोड़ा सा अनश्योर है. इट कैन बी एन ऑर्डर और इट कैन आल्सो बी एन इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और इट कैन आल्सो बी एन ऑर्डर. अब एग्जाम से आपसे कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस अबाउट? इज इट ऑर्डर? No instruction, sir. No. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यों पता चला? क्योंकि हमें पता किस we know it very well that this has been given by our teacher. So these are instructions. Similarly, if you go to different places, you will find that use me. डस्टबिन के ऊपर लिखा होता है use me. तो वो आपको ऑर्डर नहीं कर रहा, वो आपको क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है. Instruction. तो पता चला Instruction. कि social context is very important. With the help of social context, we realize what this sentence is about. लेकिन फॉर्म इसकी क्या है यहाँ पर? What is the form of this sentence? The form is imperative. इसकी फॉर्म क्या है? Imperative है. They all are imperative sentences, but they are functioning in different ways. Sometimes it is the sentence is being used to convey to
give instruction, and sometimes it is being used to give order. So this is what you have to understand. यही होता है हमारे पास डिस्कोर्स, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना होता है. और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में अक्सर लोग फंस जाते हैं बुरी तरह से. उसकी वजह होती है दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दे डोंट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस. एक बहुत सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ. ही सेड व्हाट इज योर नेम. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, हाउ विल यू चेंज दिस सेंटेंस? यस, how can you change the sentence into indirect? Can anyone tell me? He asked, what is your name? He asked, what is your Name. Okay, he asked, what is your name? ठीक है, और कोई बताएगा? जल्दी से. What is your name? He Yes. asked, what is What is your name? your name? वो तो वो ये बता दी. और किस के अलावा बताना चाहे? And that आएगा. He asked that, what is your name? He asked that what is my name? What is your name? Okay. He He asked, asked that what is my name. what is my name? Right. He asked your name. He asked your name. He asked your name. Okay. He asked my name. He asked. He asked my name. और He कोई? asked my name. That what's your name? What is my name? He asked. He asked. He asked to. What is my name? He asked. He asked पहले आ जाएगा, ठीक है. Now you can see different students have given different according to their capacity. He asked, what is your name? गलत है ये वाला जुमला, wrong. He asked what. He asked, what is your name? Is wrong. He asked that, what is your name? That तो लगा ही नहीं सकते हम लोग. We cannot use that. He asked that, what is my name? ये भी गलत है. सिंपल जो इसमें ना वो ये है, आपको समझना ये कि वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है. किसका नाम पूछ रहा है? हमारा. आपका पूछा है ना. तो जब आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप इनडायरेक्ट में क्या बताएंगे, वो कहेंगी? He asked my name. Yes. For example, according to rules, you will say he asked what my name is. Name is. ठीक है. और अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहेंगे तो आप ये कहेंगे he asked my name. इसमें क्या होगा? ये जो आपके पास ये नीचे वाला है, this is according to rules, and this one he asked my name, this is practically. जो practically हम use करते हैं वो यही करते हैं, he asked my name, and this one is something that is according to rules. So how do we do this thing? When we understand what the concept is all about. Concept क्या हमारे पास जिसको हमने convey करना है. If we don't understand the concept, then it means we have not understood the discourse. Is that clear? So discourse is something that is everywhere. We need to understand it in context. So this is inshallah something we'll talk about. इस तरह से एक और मिसाल है छोटी सी. He said, please help me. Now what is this? How will you change this one? How will you say this in your own words? He asked help from me. He asked help from me, right? Very good. He asked for help. He asked. He asked for help. अब इसमें My help. this part, we have to understand this part. What this He requested particular to part help. is telling us about. Because क्या बता रहा हमें? He It is telling requested us- to help. Yeah, request is being made. So he requested me. किससे request की? Me. किसकी help करनी है? Help. Him. Him. For He requested me to help him. To help him.
और इसको यूं भी कह सकते हैं कि he said He- that, ये आप कह सकते हैं क्या? Help. Yeah, Help me. he is requested to help me. This Help is me. not help me, he requested to help me because here request is being made. तो आपने जब इसे पढ़ा आपको समझ में आया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही, तो आपने क्या किया? You use request in the beginning reporting speech में, and then you change according to the certain rules. So this is how understanding is very important. What the speaker is saying, what the discourse is all about. When you understand, then we can easily overcome the problem of direct and indirect speech. जो direct and indirect speech में अक्सर students जो है परेशान हो जाते हैं. The main reason why they get worried is that they don't understand the sense. When they don't understand the sense, then they are in trouble. अच्छा, अब कहा जा रहा है Sir, discourse in context. Discourse in context may consist of only one or two words, as in stop or no smoking. अगर कोई stop कहता है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने रुकना है. और वजह क्या है? कुछ भी हो सकती है. You need to stop. इसी तरह से नो स्मोकिंग अगर कहा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? अभी कोई जुमला नहीं है. व्हाट डज इट मीन? या स्मोकिंग नहीं कर सकते. Instruction मतलब है, against smoking. it means that nobody is allowed to do smoking here. So simple दो words कह दिया, no smoking. This is enough. Understandable. Alternatively, a piece of discourse can be hundreds of thousands of words in length. यानी कि डिस्कोर्स एक वर्ड भी हो सकता है और एक दो वर्ड्स भी हो सकते हैं. और डिस्कोर्स जो है वो सैकड़ों बल्कि हजारों लाइंस भी हो सकती है. जैसे कि नॉवेल है आपके पास, आपने पूरी नॉवेल पढ़ी, फिर आपको समझ में आया बात क्या कही जा रही है इस नॉवेल के अंदर. सो डिस्कोर्स कैन बी वन वर्ड और टू वर्ड्स, और इट कैन बी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन लेंथ, एज सम नॉवेल्स आर. कुछ नॉवेल्स आपको मिलेंगी जिनकी पेजेस जो है 1000 से भी ज्यादा है. For example, you have David Copperfield, which is very lengthy. A typical piece of discourse is somewhere between these two extremes. So जो typical हमारे पास जो discourses pieces of discourse है, वो इन दोनों के दरमियान आपको normally मिलेंगे. तो इससे पता क्या चला कि एक वर्ड भी हो या दो वर्ड हो या सैकड़ों लाइनें हो, they all come in the category of discourse. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we stop here. I'll continue inshallah after 10 minutes, right? And now we will talk about inshallah literary discourse and journalistic writing. Remember वहाँ भी discourse का element है, लेकिन वो literary discourse है, तो हम इसको थोड़ा देखेंगे वहाँ पर भी. ठीक है? Social theory of discourse in political science. These are different things. Discourse in political science, discourse analysis क्या होता है जो आपको मैंने शुरू में बताया. This is what we call discourse analysis. Then media discourse. It is the parameter within which a particular issue is publicly discussed or framed by the media. In other words, it is the ongoing packaging of our interactions depending on the discourse present. And media is everywhere. Where media discourse refers to the interaction that takes place through a broadcast platform, whether spoken or written, in which the discourse is oriented to a non-present reader, listener, or viewer. मुझे भी याद है हम एक देखते थे ये PIDC के बिल्डिंग के सामने, वहां पर एक था कि I am loving it. ये पता नहीं किस चीज के लिए इश्तिहार था, उसमें था I am loving it. Can you tell me about this? Yes, sir. McDonald's. McDonald's. Sir, McDonald's का था ये. McDonald. Now sometimes it happens that they make deliberate mistake or error. Why do they make deliberate error? Because their main target is, क्योंकि उससे बात तो समझ आ रही होती है, वो असल में चाहते क्या है कि वो लोगों की रीडर्स को मुतवज्जो करना चाहते हैं. For this purpose sometimes they deliberately make mistake, and with this what happens, readers read them and their target is achieved. तो ये भी इसका एक हिस्सा होता है. They reduce articles, they reduce sometimes some other things, and sometimes even they make deliberate mistakes. So inshallah we'll discuss them later on. This is what we have media discourse. See you inshallah after 10 minutes, right? In other subject class.